NDTV ऑटो शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं क्या खास होने वाला है आज के शो में। मासेराती की SUV ग्रेकाले का रिव्यू, नई बजाज पल्सर N125 की टेस्ट राइड, BYD की MPV eMax 7 का रिव्यू। Global love for SUVs forced even the true blue sports car makers into SUV genre. Maserati's answer to SUV question is Grecale. Grecale का फ्रंट स्पोर्टी तो दिखता है लेकिन एलिगेंट भी उतना ही दिखता है। बस एक ही चीज़ मुझे लगी, ये जो हेडलैम्प्स हैं ये थोड़े से छोटे पता चलते हैं इसके फ्रंट में जिस बड़े साइज के सामने। 21 इंच के व्हील्स आपको मिल रहे हैं। यू गेट बिग चंकी टेल लैम्प्स एट द बैक, Maserati written here right in the center. Then you get these 4 quad exhaust with diffusers. मुझे ये रेड कलर बहुत ही पसंद आया है। ये बहुत डार्क नहीं है, बहुत शार्प नहीं है, परफेक्ट है अपहोल्स्ट्री के लिए। It's just the perfect red for an Italian car. यहाँ पर 2 स्क्रीन दी गई हैं, एक टेम्परेचर मैनेज करने के लिए और दूसरे आपकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन है और सामने आपके पास डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है। बहुत बड़ी स्क्रीन्स नहीं है, डजंट लुक ओवरवेलमिंग। यहाँ पर आपको कोई गियर लीवर, गियर सिलेक्टर नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर जो गियर आपको सेलेक्ट करने हैं यहाँ इन बटन से सेलेक्ट करने हैं। यू गेट अ सनरूफ हियर और यहाँ पर ये 3 बटन दिए गए हैं और मासेराती की हेरिटेज को याद दिलाते हुए क्लॉक खुल जाती है। डिजिटल है बट लुक्स नाइस। ये रोटेटिंग टाइप नॉब्स हैं पर ये उतने स्मूथ नहीं हैं जितना कि से फॉर एग्जांपल मैंने मर्सिडीज में देखा है। एंड दीज सीट्स आर हीटेड and ventilated. Even the steering is heated for colder climate. हमारे यहाँ तो काम नहीं आने वाला। थोड़ा सा कुशनिंग इनकी हार्ड साइड पर है तो लॉन्गर ड्राइव्स पर भी आपके साथ कंफर्ट बना रहेगा। I think the backrest is a little upright. Thigh support is also limited, लेकिन लेग स्पेस यहाँ पर काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। फुट स्पेस भी बढ़िया है तो पैर आराम से आप आगे करके बैठ सकते हैं। This is Grecale Modena. You get a 2-liter 4-cylinder turbocharged engine with e-boost. What is this e-boost? Well, you basically get a 48-volt starter generator which gives a boost to the engine at low RPMs. So the power delivery becomes quite smooth. This is a Maserati. It is supposed to be fun and it does offer you a lot of fun. Despite the fact that you get a 2-liter 4-cylinder engine, this car still is a lot of fun. 0 to 100 comes up in 5.6 seconds and when you push it, when maybe from standstill or you are at say 60-70 kph and you need a little burst of power, you push the pedal and the engine responds quickly and it feels eager to deliver. The 450 Nm of torque is delivered seamlessly with an even spread from 2000 rpm all the way up to 5000 rpm. The engine is paired with an 8-speed torque converter transmission. 3 मोड्स आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं, कंफर्ट, GT और स्पोर्ट्स मोड। GT मोड में मैंने ज़्यादातर इसे चलाया है और अगर आप GT मोड में या किसी और मोड में भी गाड़ी से ज़्यादा स्टिफ सस्पेंशन चाहते हैं तो आपको बस यहाँ पर ये बटन प्रेस करना है। ये ड्राइव मोड्स के लिए जो नॉब है उसी के सेंटर में आपको बटन मिल जाता है स्पोर्ट सस्पेंशन चूज करने के लिए। नाउ इन स्पोर्ट्स मोड गाड़ी बहुत ही क्विक रिस्पांस देती है, इतना क्विक कि आप सरप्राइज भी हो सकते हैं। The suspension in sports mode is quite stiff but not uncomfortable, at least not on the highways. Overall इस गाड़ी की जो हैंडलिंग है वो मुझे बहुत पसंद आ रही है। स्टीयरिंग प्रिसाइज है, वेटेड पता चलता है और थोड़ा सा बॉडी रोल है लेकिन अगर आप शार्प टर्न्स वगैरह लेते हैं तो गाड़ी काफी इन कंट्रोल पता चलती है। I did sit at the back while the car was being driven and it felt quite a comfortable ride. You also get ADAS functions जिसके बटन्स आपको यहाँ सामने स्टीयरिंग पर ही मिल जाते हैं और उनको मैनेज करना काफी आसान पता चलता है। एक पॉइंट यहाँ पर मैं जरूर करना चाहूंगी कि इसका जो ब्रेक फील है वो थोड़ा सा वुडन लगा मुझे बिकॉज ये हाइब्रिड है। 48 वोल्ट का जो इसका सिस्टम लगा हुआ है उस पर रीजनरेटिव ब्रेकिंग चाहिए होगी उसको चार्ज करने के लिए, तो वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जो ब्रेक फील होती है वैसा थोड़ा सा यहाँ पता चलता है। What adds to the fun element of Grecale is the sound it makes. But only in sports mode.
The Maserati Grecale starts at an ex-showroom price of Rs 1.3 crore with the top-of-the-line Trofeo variant powered by a V6 engine priced at Rs 2.05 crore. Despite being an SUV, the Grecale stays true to Maserati's core DNA. It boasts the hallmark Italian design with striking looks, luxurious interiors, ample space, a wealth of features, and delivers an exhilarating driving experience. Hello and welcome to NDTV Auto, and today we are riding the all-new Bajaj Pulsar N125. Yes, it's not the Pulsar 125, it's not the Pulsar NS 125. This is all-new Bajaj Pulsar N125. Sits right between the Pulsar 125 and the NS 125, and Bajaj says that this is an all-new product and we'll be riding it. In fact, we just had a brief stint at this tiny go-kart track right behind me. And as far as the performance and the design and the feature set is concerned, we'll tell you all about that. First, let's talk about the design of the Pulsar N125. And yes, as far as the overall looks are concerned, it quite sits well with me because I really like the design on this motorcycle. This panel that you see here done in nice shade of purple, sharp fuel tank extensions. And if you go down to the front section, you have this nice angular headlight right here, and adding to the visual mass, to the visual appeal, are these fork tubes that you see here. So basically there are thin 30mm tubes underneath this, and just to give it more bulk, more visual appeal, Bajaj has given those fork sleeves, fork covers. And yes, the overall design is very youthful. So Bajaj has targeted the Pulsar N125 mostly towards the youth, the Gen Z so to say, but Bajaj also says that this is a practical motorcycle and other members of the family will not hesitate in riding this. So practicality is another aspect that Bajaj has kept in mind while designing this motorcycle, and yes, we quite like the looks of it. Like I said, the Pulsar N125 is offered in two variants, with and without Bluetooth, but there are a few more changes. The Bluetooth model gets a digital display, an integrated starter generator along with an idle start-stop system. The one without Bluetooth gets a different display and no ISG along with no idle start-stop system. The color schemes are different on both motorcycles too, and the rear tire on the base model is 10mm narrower than the one on the top spec model. And now let's get to the engine and the performance part of it. So Bajaj says that the Pulsar N125 gets an all-new 125cc engine, single cylinder, air cooled of course, and the chassis is all new as well. It's a diamond frame and it has been tweaked from the other models in the segment that Bajaj has, slightly tweaked to increase the torsional rigidity and the stiffness so that the motorcycle handles better, and we'll talk about that in a bit. Coming to the engine, it makes about 12 PS at 8500 rpm. Yes, it's a high strung engine, and 11 Newton meters of peak torque at around 6000 rpm. Bajaj says that 80% of the torque is available from 2500 rpm. So it is a torquey engine, and when we rode the motorcycle in the city, we felt that the bottom end grunt is quite strong and the mid range is quite solid as well. Bajaj claims that the top speed of this motorcycle is about 97 kilometers per hour, and we touched 95 or so on the highway. And apart from that, the 0 to 60 kilometers per hour sprint is done in just 6 seconds. So it's a decently quick motorcycle, and the performance, the refinement from the engine is decent. So the moment you start going higher on the RPMs, you feel this buzz, very subtle, from the foot pegs, from the handlebar, but overall the NVH levels, the refinement on this motorcycle is pretty decent. And yes, talking about the handling and the ride quality of this motorcycle, first we tested the handling and the maneuverability on this test track, and I'm happy to report that the motorcycle does really well. It tackles sharp corners really well, it stays planted even when you're leaned over, and the grip from the tires is pretty decent. And if you were to talk about the ride quality of the motorcycle, well, the suspension front and rear, it gets a travel of 125 millimeters at both ends, and it is decently sprung, decently set up to tackle
most speed breakers, most undulations on the road, as long as they are not too tough. And the motorcycle also has a ground clearance of 198 millimeters, which is perhaps the best in the segment as far as 125cc bikes are concerned. It has a seat height of 795 millimeters, not too tall and not really low either. It is decent. The handlebar is decently wide, and the motorcycle weighs in at 125 kg, which is pretty light, and the ground clearance is a good 198 millimeters, more than enough to tackle big breakers or big undulations on the road. And yes, it feels nice and easy to ride in the city because it's light, it's flickable, it's nimble, and you'll enjoy filtering through traffic on this motorcycle. To sum it up, the Bajaj Pulsar N125 is a decent motorcycle. It's priced competitively. The pricing is pretty decent. It goes up against the likes of the TVS Raider and the Hero Extreme 125R in a segment, not to mention its own sibling, the Pulsar NS 125. There will be some amount of cannibalization, that's right. Well, as far as the overall design is concerned, it's nice, it's fresh, it's youthful. It will definitely appeal to the youngsters, the college going crowd, or the young professionals. And the performance is par for the course. It's not really sporty, but it's a mix of sportiness and practicality. द NDTV ऑटो शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चाइनीज कंपनी BYD ने अपनी MPV लॉन्च कर दी है eMax 7। अनिर्बान मित्रा ला रहे हैं इसका रिव्यू। Now it's time to welcome the successor of E6 in the form of eMax 7. Essentially ये एक 3-row electric MPV है। कंपटीशन एक्चुअली कोई है नहीं मार्केट में, लेकिन प्राइस पॉइंट के लिहाज से बहुत हद तक ये टक्कर दे सकती है इनोवा हाई क्रॉस को। शुरुआती कीमत 27 लाख से थोड़ा सा कम, एंड टॉप मॉडल फुली लोडेड इज़ 29,90,000 रुपीज़ एक्स शोरूम। और फेस की तरफ अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा इट्स अ वेरी फ्लोई डिज़ाइन, बहुत ज़्यादा आपको हैप्पजार्ड मोशन नहीं दिखेगा, विच इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग फॉर एन MPV। फ्लश डिज़ाइन फॉर द ग्रिल, BYD का लोगो काफ़ी अच्छा लग रहा है इस सैटिन फिनिश पे। कंपनी सेज द इंटरनल्स फॉर द हेडलैम्प्स हैव बीन चेंज, थोड़ा सा रीडिजाइंड लग रहा है। डायमेंशनली इट हैज़ नॉट चेंज, इट स्टैंड्स ओवर 4.7 मीटर्स इन लेंथ, द व्हील बेस इज 2.8 मीटर्स, मार्जिनली लेस देन द इनोवा हाई क्रॉस। जो एलॉय का डिज़ाइन है वो पहले के मुकाबले चेंज हो चुका है। इट्स अ कनेक्टेड यूनिट, और ज़्यादा अपीलिंग लग रहा है। पहले वाला थोड़ा सा ड्रैब सा डिज़ाइन था। इंटरनल्स आर ऑल्सो न्यू। जो टेल गेट है ये भी अब इलेक्ट्रिक बन चुका है, विच इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग। यू आर स्पेंडिंग क्वाइट लॉट ऑन दिस कार। लेकिन थर्ड रो आने की वजह से बूट स्पेस में बहुत ज़्यादा कटौती हुई है। लगभग 180 लीटर का बूट स्पेस आपको मिल जाएगा इफ़ ऑल 3 रोज आर अप। जो पहले E6 आती थी दैट वाज अ 5-सीटर वेरिएंट, तो आपको यहाँ पे स्पेस ढेर सारा मिलता था, चाहे बूट स्पेस की बात करें या फिर मिडिल रो में लेग रूम। थिंग्स हैव बीन रीप्रोफाइल्ड। तो यहाँ पे अगर आपको थर्ड रो एक्सेस करना पड़ेगा, यू हैव बोथ द ऑप्शंस, मतलब कैप्टन सीट वेरिएंट भी आता है, बेंच सीट भी आता है। बेंच सीट इज स्लाइटली हायर प्राइस दैन द कैप्टन सीट्स, और इन्हें टम्बल करके आपको पीछे जाना पड़ेगा। अब देखिए ये जो सीट है बहुत आगे की तरफ धकेला गया है, सो यू गेट गुड अमाउंट ऑफ लेग रूम। थाई सपोर्ट इज 0, हेड रूम 6 फुट के व्यक्ति के लिए ठीक है, लेकिन इफ यू आर वेरी टॉल यू विल नॉट फाइंड कंफर्टेबल। यू हैव डेडिकेटेड AC वेंट्स, यू हैव डेडिकेटेड USB चार्जिंग पोर्ट फॉर द सेकेंड रो, अ बिग सनरूफ almost to my head. The glass area is good. The fabric is now changed. It's more this mocha brown color, ये dark tan brown color का इस्तेमाल हो रहा है। ज़रूर प्रीमियम फील होता है। few features that I think should have been considered, जैसे कि सेकेंड रो पैसेंजर्स के लिए भी वेंटिलेशन प्रोवाइड करना चाहिए था। दिस विल फील रियली स्वेटी इन इंडियन कंडीशंस। सन ब्लाइंड भी शायद कंसिडर कर सकती थी कंपनी विद दिस कार, स्पेशली द टॉप मॉडल। It's still that huge rotatable screen. It's a 12.8-inch screen and touch of a button. This rotates from vertical to horizontal and vice versa. The 360-degree camera is also nice. The visuals are crisp. Wireless charging pad add हो चुका है. The gear lever and the central console area has also been redesigned. ये जो gear selector knob है ये थोड़ा प्रीमियम लग रहा है पहले के मुकाबले। This has been changed. कंपनी इसे भी थोड़ा अपग्रेड कर सकती है। This feels a little bare plastic, ऊपर ये जो प्लास्टिक इस्तेमाल हो रहा है, this feels a little too cheap for a car that costs roughly 30 lakh rupees also. ये देखिए inside rear view mirror ये भी मैनुअल दिया गया है। These things could have been touched upon, ये चीज़ें चेंज की जा सकती थी। However, the front seats are electrically adjustable,
और इनका जो सपोर्ट है, पैडिंग, कुशनिंग, एवरीथिंग इज़ एक्चुअली क्वाइट लाइकेबल। जो स्टीयरिंग व्हील है ये भी चेंज हो चुका है। दिस इज़ अ न्यू स्टीयरिंग यूनिट एंड यहाँ पे नए कंट्रोल्स आ चुके हैं। दीज कंट्रोल्स आर फॉर level 2 ADAS, which again on the safety front has a step up in this car। अब आपको 2 डिफरेंट मोटर कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएंगे और साथ ही साथ 2 बैटरी पैक ऑप्शन भी मिल जाएंगे। पहले की तरह ही 71.8 किलोवाट आवर बैटरी पैक को कंटिन्यू किया गया है। ऑप्टिमाइजेशन इज़ बेटर, विच मीन्स रेंज थोड़ा सा ज़्यादा अब कंपनी क्लेम कर रही है एट 530 किलोमीटर्स टू अ सिंगल चार्ज। अलॉन्ग विद दैट एक छोटा बैटरी पैक भी उतारा गया है 55.4 किलोवाट आवर, विच प्रोमिसेस अ रेंज ऑफ roughly 420 kilometers to a full charge, which means roughly it translates into 360 to 380 kilometers in real life condition। आपको यहाँ पे 2 मोटर कॉन्फ़िगरेशन मिलते हैं, स्पेशली विद द बिगर बैटरी पैक द आउटपुट नाउ स्टैंड्स ओवर 200 हॉर्स पावर, 310 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। सिमिलरली जो छोटा बैटरी पैक है वहाँ पे जो मोटर दिया गया है दैट मेक्स around 163 horsepower and same amount of torque। This is a huge jump over the previous E6। 3 ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं, स्पोर्ट, इको एंड नॉर्मल। और रीजनरेशन का भी जो लेवल है देयर इज वन स्टैंडर्ड एंड द सेकंड इज लार्जर में द इंट्रूशन इज क्वाइट हाई, लेकिन इट इज़ नॉट कंप्लीटली वन पेडल टेक्नोलॉजी। हमने बहुत सारी गाड़ियों में देखा है वेयर यू सेट द रीजन एट द टॉप एट मैक्स, आप सिंगल पेडल ड्राइव कर सकते हैं। वैसा सीन यहाँ पे नहीं है। कंपनी 8 साल 1,60,000 किलोमीटर का वारंटी का दावा करती है, साथ ही साथ मोटर पे भी 8 साल का वारंटी है। फ्यू इलेक्ट्रिकल पार्ट्स कम विद 6 years ऑफ वारंटी, रफली इनटू 1.5 लाख किलोमीटर्स। साथ ही साथ सेफ्टी में भी सुधार हुए हैं। ADAS लेवल 2 हैव किक्ड इन। आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिलेंगे जो रियल लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल रिवर्सिंग असिस्टेंट या फिर ब्लाइंड स्पॉट्स अगर गाड़ी निकल रही है इट काइंड ऑफ गिव्स यू एन अलार्म। अगर आप बिना नज़र दौड़ाए अगर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं द अलार्म सिस्टम बीप्स एंड लेट्स यू नो। सिमिलरली अगर आप हाईवे पे चल रहे हैं तो लेन डिपार्चर वार्निंग, ऑल दीज कोलिशन अवॉइडेंस, all these factors really come in and level 2 ADAS की जो इम्पोर्टेंस है वो आपको और ज़्यादा महसूस होती है इस गाड़ी के साथ। एक 7 किलोवाट का AC वॉल बॉक्स चार्जर कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है, which roughly takes 10 hours to fully charge the battery। तो कैसी लगी आपको BYD eMax 7? अपने व्यूज़ आप हमारे साथ शेयर करिए NDTV ऑटो के YouTube चैनल पर और उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं आपके फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।